सो हेलो एवरीवन। तो आज देखेंगे हम हमारे जो रिमेनिंग 30 एमसीक्यूज है ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज कार्बन कंपाउंड्स, which is all of the MCQs. So in the previous part we have completed with the 20 MCQs. So now we will be starting with the 21st MCQ of this 50 MCQ series. चलिए शुरू करते हैं. So this is the 21st question. सो क्वेश्चन आपके सामने है कि डिटर्जेंट्स वर्क वेल इन. सो ऑप्शंस आर सॉफ्ट वाटर ओनली, ऑप्शन बी इज हार्ड वाटर ओनली, हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, एंड ऑप्शन डी इज द डिस्टिल्ड वाटर ओनली. यू कैन आंसर द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इन द चैट. Yes, so correct answer for this question, that is detergents work well in. So correct answer for this question here, that is option C, both hard and the soft water. Yes. So we'll be moving forward with the next question. So next question आपके सामने है. Of the following is an unsaturated hydrocarbon. So is option B is propane, option C and option D is the. So you can answer the in the live chat that which will be the correct answer for this question. Yes. तो अगर हम देखें, सो इस क्वेश्चन जो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा, फॉलोइंग इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. सो सबसे पहले हमें जो से रिलेटेड वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा. So that we are having two types of the carbons. Means they are classifying the hydrocarbons into the two categories. First one is the saturated hydrocarbon and second is the unsaturated. So saturated hydrocarbons are containing those carbon compounds which are in the carbon-carbon single bond. यानी जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, so that type of the hydrocarbons which we classify it as saturated hydrocarbon. और unsaturated में क्या होगा? Unsaturated will contain that is the carbon carbon double bond, carbon carbon triple bond. हाइड्रोकार्बन. तो हमें क्वेश्चन वही पूछा गया है कि व्हाट विल बी द विच ऑफ इज द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. यानी कि हमें ऐसा हाइड्रोकार्बन यहाँ पर बताना है दैट वी हैव टू सिलेक्ट करेक्ट आंसर एज सच कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि उस कार्बन बॉन्ड में यहाँ पर डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए. So if we are seeing the options, option so options are ethane, propane, ethene, methane. So propane, ethane, propane, and methane. These are all the compounds that are showing the carbon-carbon. Ethene जो है is showing that is the C double bond C. So ethane structure देखो, so it will be the C double bond C, and here that it will be the H2, and here it will be the H2. So यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की चेन हमें यहाँ पर दिखाई देती है. So due to which that unsaturated hydrocarbon it is of the category. So
The correct answer for this question here will be the option C, that is the ethene. So बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. So addition reactions are characteristics of. So addition reaction जो हमने यहाँ पे देखी थी, addition reaction, substitution reaction, esterification, saponification. These are the various different reactions which we have studied in this chapter of the carbon compounds. So addition reaction is the characteristic of. तो कौन से इसके कैरेक्टरिस्टिक है? ऑप्शंस आपके सामने, अल्केन्स, अल्किन्स एंड अल्काइंस, अल्कोहल्स या फिर एसिड्स. सो आप यहाँ पर लाइव चैट में बता सकते हैं दैट फ्रॉम द गिवन फोर ऑप्शंस विच इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो करेक्ट आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का कि एडिशन रिएक्शंस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अल्किन्स एंड अल्काइंस. So alkenes and alkynes is the correct answer for this question. Yes, so 1 minute. So correct answer is option B. Sorry for the disturbance as there was the network issue. Yes, so हम देख रहे थे कि यहाँ पर that is addition reactions is the characteristics of. So yes, this the correct answer for this question here will be option B, that is the alkenes and the alkynes. So addition reaction की अगर हम यहाँ पर बात करें, so as we have seen about the hydrogenation reaction also, in which the hydrogen is getting added. So ऐसे अलग अलग एडिशन रिएक्शंस यहाँ पर हमें दिखाई दे रही. सो नेचुरली हमें ऑब्जर्व होता है कि अल्किन करेक्ट आंसर यहाँ पर जो होगा ऑप्शन अल्किन. Yes, so we'll be moving forward with the next question. So next question, next question आपके सामने है, that is substitution reactions are typical for. So options आपके सामने यहाँ पर है, that will be the alkanes, alkenes, alkynes या फिर alcohol. तो आप जल्दी से यहाँ पर बता सकते हैं लाइव चैट में that what will be the correct answer for this question. Yes, so correct answer जो होगा इस क्वेश्चन का, that is substitution reactions are typical for. So correct answer will be that is the option A, alkanes. So moving forward with next question, the homologous series shows. So option है आपके सामने different functional group, same functional group, different valency या फिर no pattern.
यस, सो करेक्ट आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का कि होमोलोगस सीरीज शोज, सो दैट इज द ऑप्शन बी, सेम फंक्शनल ग्रुप. That will be the option B, that is the same functional group. So homologous series are the series जिसमें अगर हम देखें, so we will I will be showing you one of the homologous series. So suppose मुझे अल्कोहल की homologous series लिखनी है. So अल्कोहल जो होता है that is the functional group. So dash OH, ये तो हो गया अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप. सो अगर अल्कोहल की अगर मुझे होमोलोगस सीरीज लिखनी है, सो आई कैन राइट इट एज द CH3OH, that is the methanol. Then I can write as C2H5 dash OH. So ये यहाँ पर हो गया ethanol. Then C3H7 dash OH. So this is the propanol. Similarly, you can write down the various different homologs. So अगर हम देखें यहाँ पर तो कॉमन क्या है, यहाँ पर OH फंक्शनल ग्रुप दैट इज अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप इज कॉमन. यहाँ पर भी OH कॉमन है, यहाँ पर भी OH कॉमन है. सिर्फ जो यूनिट चेंज हो रहा है दैट इज द CH3, C2H5, C3H7. और अगर हम इन दोनों की अगर डिफरेंस की अगर बात करें, सो यहाँ पर एक कार्बन बढ़ गया है, सो कार्बन वन इज इंक्रीज, एंड यहाँ पर दो हाइड्रोजन बढ़ गए, सो दैट इज द CH2. सो यानी कि हम यहाँ से डिराइव कर सकते हैं, यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो भी मतलब होमोलॉग्स होते हैं, होमोलोगस सीरीज के होमोलॉग्स, सो होमोलॉग्स डिफर each other with the CH2 group. और CH2 ग्रुप क्या होता है, दैट इज द मिथिलीन यूनिट. सो इसका एटॉमिक मास भी कभी कभी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है. सो अगर हम इसका ओवरऑल मॉलिक्यूलर जो मास है कंबाइन करके अगर हम कैलकुलेट करें, सो कार्बन इज 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, एंड देर आर द टू हाइड्रोजन. सो यहाँ पर इट कम्स आउट टू बी द 14 यूनिट्स. सो जो मॉलिक्यूलर मास से जो डिफर करता है होमोलॉग, सो दैट इज द 14 यूनिट्स. I hope the doubt regarding with this question has been clear to you. So correct answer हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का? So correct answer, the homologous series shows the same functional group. यानी सेम फंक्शनल ग्रुप, जैसा कि हमने देखा कि डैश ओ एच के जो होमोलॉग्स हमने देखे, सो होमोलॉगस सीरीज में सेम फंक्शनल ग्रुप ऑब्जर्व होता है. तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज द सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ द होमोलॉगस सीरीज डिफर बाय. देखिए, वही क्वेश्चन आपके सामने आ गया रिगार्डिंग व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू राइट नाउ. कि सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज डिफर बाय, सो किससे, CH3, CH2, C2H2 या फिर H2. सो आप इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर बता सकते हैं लाइव चैट में. यस, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा दैट विल बी द ऑप्शन बी, CH2, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया. तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपाउंड हैज सिंगल बॉन्ड्स ओनली. सो ऐसा कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड है जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है. ऑप्शंस आपके सामने, इथिन, इथाइन, मीथेन या फिर बेंजीन. तो देखते हैं हम सारे इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करके कि अगर यहाँ पर देखें, सो इथिन के इसमें दैट इज अल्किन, सो इट कंटेन्स द डबल बॉन्ड. Ine, that is the alkyne, so ethyne will contains the triple bond. Methane, that will be the single bond. और benzene जो होता है that is the aromatic compounds, so it contains the alternate single or single and double bond. So correct answer यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिंगल बॉन्ड किस में है. So single bond will be observed in the
That is the option C, methane. Yes, so moving forward with the next question. The formula of the ethanoic acid is, so इथेनोइक एसिड का हमें यहाँ पर फॉर्मूला पूछा गया है. सो ऑप्शंस आपके सामने CH3COOH, C2H5OH, HCOOH, या फिर ऑप्शन डी CH4. सो इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला हमें यहाँ पर पूछा गया है. सो इथेनोइक, इथेन, it contains, so ethane will be the carbon, two molecules will be there. So कार्बन के यहाँ पर दो होंगे एटम्स. सो इट विल बी द CH3COOH. So correct answer for this question will be here, that is the option A, that is CH3CO, क्योंकि कार्बन के दो यहाँ पर होने चाहिए. सो मेजर मिस्टेक यहाँ पर क्या करते हैं बच्चे कि आई विल शो यू रिगार्डिंग विद दैट, कि जैसा कि हमने पढ़ा है कि CH4 मीथेन, C2H6 इथेन. तो अगर हम एसिड की अगर हम बात करें, सो COOH, ये जो एसिडिक ग्रुप जो होता है, दैट इज द कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप विच अटैच टू द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स. सो यहाँ पर जो कार्बन होता है, सो इट इज द कार्बन कंटेनिंग ओनली ग्रुप. लेकिन जब हम इथेनोइक एसिड के बारे में अगर हमें यहाँ पर पूछा गया, सो CH3COOH, दिस इज द इथेनोइक एसिड. लेकिन बहुत बार जो कंफ्यूज करता है इस क्वेश्चन में जो पार्ट, सो दैट इज कि हम देखते हैं कि C2 इज द इथेन, सो हम C2 देखने के लिए कोशिश करते हैं, और ऑप्शन में C2H5 भी होता है. दैट इज, अगर यहाँ पर हमने देखा कि C2H5, दैट इज, और CO, that is COOH is also present in the option. तो बहुत बार मतलब बच्चे इसे सही करके आते हैं, लेकिन ये सही आंसर नहीं है इस क्वेश्चन का. इथेनोइक एसिड जो होगा यहाँ पर CH3COH, दिस विल बी द करेक्ट आंसर, नॉट द C2H5COH. इट विल बी द प्रोपेनोइक एसिड, क्योंकि हम जो यहाँ पर क्यूमुलेटिव कार्बन्स को काउंट करते हैं ऐसे कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स में. सो यहाँ पर अगर हम देखें तो दो कार्बन तो यही हो गए, दैट इज द CH3 का एक कार्बन और COH का एक कार्बन. दिस विल बी द C2, एंड दिस वन कार्बन दैट विल बी द C3. सो करेक्ट आंसर जो होगा, हमें यहाँ पर इथेनोइक एसिड के बारे में पूछा गया था. सो करेक्ट आंसर विल बी हियर, दैट इज द ऑप्शन नंबर ए, दैट इज CH3COH ऑफ द इथेनोइक एसिड. सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज विच इज नॉट अ हाइड्रोकार्बन. सो कौन सा हाइड्रोकार्बन यहाँ पर नहीं है? मीथेन, इथीन, इथेनॉल, या फिर प्रोपेन. यस, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, दैट इज विच इज नॉट अ हाइड्रोकार्बन, सो दैट विल बी द ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द इथेनॉल. सो मीथेन जो है, दैट इज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. इथीन जो है, दैट विल बी द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. और प्रोपेन जो है, दैट इज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. सो हाइड्रोकार्बन क्या नहीं होगा, सो दैट विल बी द इथेनॉल. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर. ऑप्शन है आपके सामने, ब्लू, मिल्की, ग्रीन, या फिर रेड.
यस, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर, दैट इज द ऑप्शन बी, मिल्की। सो मूविंग फॉरवर्ड विथ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दैट इज द कंबस्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड प्रोड्यूसेस, सो CO2 एंड हीट, O2 ओनली, H2 ओनली, या फिर ऑप्शन डी इज N2 ओनली। यस, तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, सो दैट विल बी द ऑप्शन नंबर, दैट इज ए, CO2 एंड हीट। दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज CO2 एंड हीट। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज विच एलोट्रोप ऑफ कार्बन कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिसिटी। सो ऑप्शन है आपके सामने, डायमंड, ग्रेफाइट, कोल, या फिर चारकोल। यस, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा, सो करेक्ट आंसर देने से पहले कि हमें देख लेते हैं कि व्हाट इज द एलोट्रोप। एलोट्रोप क्या है, व्हाट आर द एलोट्रोप्स। सो एलोट्रोप्स की अगर हम बात करें, सो एलोट्रोप्स आर दोज दैट दे आर शोइंग द देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एज द डिफरेंट, लेकिन उनके अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर स्टडी करें, सो केमिकल प्रॉपर्टीज, दे विल बी मेड अप ऑफ द ओनली वन कंस्टिट्यूएंट। अगर हम एलोट्रोप्स जो भी हमें यहाँ पर दिए गए हैं कि ऑप्शंस में, दीज आर ऑल द एलोट्रोप्स, एज अ डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, कोल हो गया, चारकोल। सो अगर हम इन सारे इसकी अगर हम बात करें, सो द मेजर कंस्टिट्यूएंट विच इज द कॉमन इन ऑल ऑफ दिस फोर, दैट इज द कार्बन। That is the carbon in all the four which are given in the option. So carbon as the main constituent in all, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टीज ये मतलब दिखाई देते हैं, सो दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू विच दे आर क्लासिफाइड और दे आर सेपरेटेड। सो जैसे कि डायमंड की अगर हम प्रॉपर्टीज देखें, सो डायमंड इज शोइंग द लस्टर, मतलब उससे ज्यादा शाइनिंग और हार्डनेस किसी इसमें नहीं है। सो ग्रेफाइट देखें, सो ग्रेफाइट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, दैट ग्रेफाइट इज शोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर तो यहाँ पर होगा, दैट इज द ऑप्शन बी, दैट इज ग्रेफाइट, विच इज एन allotrope of the carbon that conducts the electricity। लेकिन कोल हो गया, चारकोल हो गया, सो दीज आर शोइंग द वेरियस डिफरेंट, मतलब इनके प्रॉपर्टीज जो है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, दैट आर डिफरेंट, लेकिन इनके अगर हम केमिकली केमिकल प्रॉपर्टीज इन चारों की अगर देखें, सो केमिकली दैट दे आर द कार्बन। सो four are having the major as the main constituent or chemical constituent as to be the carbon atom। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन बी, बिकॉज यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है which allotrope of the carbon conducts the electricity। सो जो कंडक्ट करता है, दैट इज द ग्रेफाइट। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड विथ नेक्स्ट क्वेश्चन। डायमंड इज हार्ड बिकॉज, सो ऑप्शन है आपके सामने, लेयर्ड स्ट्रक्चर, कोवैलेंट नेटवर्क, आयोनिक बॉन्डिंग, या फिर मेटेलिक बॉन्डिंग। सो आप लाइव चैट में बता सकते हैं करेक्ट आंसर। यस, सो करेक्ट आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का, डायमंड इज हार्ड बिकॉज ऑफ द ऑप्शन बी, दैट इज कोवैलेंट नेटवर्क which is present in the structure of the diamond, due to which it becomes the hard, and diamond is also known as the hardest substance in all over the world। So moving forward with next question, graphite is soft due to,
ऑप्शन है आपके सामने वीक फोर्सेस बिटवीन लेयर्स, ऑप्शन बी इज स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड, ऑप्शन सी इज hydrogen bonds, and option D is the metallic bonding. So you can answer the correct option. Yes, तो correct answer जो होगा इस क्वेश्चन का, that is the graphite is soft due to. So that is the option A, that is weak forces between the layers. So layers के बीच में weak forces होने की वजह से that graphite का अगर हम structure देखें, so its structure looks like that. There is the मतलब वीक फोर्सेस होते हैं, दैट इज द लेयर्स अरेंज लेयर बाय लेयर स्ट्रक्चर में वीक फोर्सेस की वजह से दैट इट इज आल्सो वन ऑफ द सॉफ्ट मटेरियल। ग्रेफाइट जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे कि पेंसिल की लीड जो होती है हमारी, सो दैट इज आल्सो मेड अप ऑफ द ग्रेफाइट, as it is used for in the writing pencils, so due to which the मतलब उनके बीच की लेयर जो सॉफ्ट होती है होने की वजह से, सो वीक फोर्सेस होने की वजह से आल्सो इट ब्रेक्स डाउन इजीली। एक जो हमने एलोट्रोप देखा डायमंड विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, मतलब कितनी वैरायटी हमें यहाँ पर ऑब्जर्व होती है कार्बन कंपाउंड्स में, कि डायमंड जो है दैट इज शोइंग द कोवैलेंट नेटवर्क स्ट्रक्चर ड्यू टू विच इट बिकम्स द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑल ओवर। और ग्रेफाइट जो होता है कि दैट इज ड्यू टू द वीक फोर्सेस बिटवीन द लेयर्स, सो इट इज द सॉफ्ट एंड इट इजीली ब्रिटल और ब्रोकन डाउन। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स। सो दैट इज हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन। सो नेक्स्ट हमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, विच फ्यूल हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, यानी किसकी इसकी ऑप्शंस में दिए गए में से कैलोरीफिक वैल्यू सबसे हाईएस्ट होती है। सो ऑप्शन है कोल है, वुड है, मीथेन है या फिर पेट्रोल। यस, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा, सो दैट विल बी द ऑप्शन सी, दैट इज द मीथेन। सो मीथेन इज हैविंग द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। सो ऑप्शन सी इज द मीथेन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एलपीजी मेनली कंटेन्स, ऑप्शन से आपके सामने मीथेन एंड इथेन, ऑप्शन बी इज प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ऑप्शन सी इज इथीन एंड इथाइन, एंड ऑप्शन डी इज मिथेनॉल एंड इथेनॉल। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा, सो दैट विल बी द ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द प्रोपेन एंड ब्यूटेन। सो एलपीजी का फुल फॉर्म जो है दैट इज द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मतलब किससे बनते हैं, सो दैट इज द प्रोपेन एंड ब्यूटेन। सो आपको मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि ऑप्शंस में यहाँ पर प्रोपेन ब्यूटेन ऐसा भी दिया, ऐसा ही दिया जाएगा। सो इट मे आल्सो गिव द मॉलिक्यूलर formulas of all of these compounds, and then they may ask to find out which of the following is the correct option. So प्रोपेन का अगर हम फॉर्मूला देखें, सो प्रोपेन इज दैट इज द C3H8, and butane is that is the C4H10। सो ऐसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देके भी वो आपको मतलब यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आप सकते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, और बाकी के भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऐसे ही सिमिलर आपको दिए जा सकते हैं। सो लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि एलपीजी मेनली कंटेन्स द दैट इज द प्रोपेन एंड द ब्यूटेन। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज सीएनजी स्टैंड्स फॉर। सो एलपीजी हमने देख लिया कि एलपीजी इज द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सो सीएनजी क्या है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, कार्बन न्यूट्रल गैस, कंबाइंड नेचुरल गैस या फिर क्लीन नाइट्रोजन गैस।
यस, तो इस क्वेश्चन का अगर हम देखें करेक्ट आंसर यहाँ पर जो होगा, सो दैट विल बी द compressed नेचुरल गैस, दैट इज द सीएनजी. So option A will be the correct answer for this question. So बढ़ते हैं next question की ओर. Which gas is a greenhouse gas? So we have given different gases as in the options और हमें बताना है कि कौन सी greenhouse gas from the following options is there. So option A O2, N2, CO2 या फिर H2. Yes, so correct answer जो होगा, that is the which gas is a greenhouse gas. So correct answer for this question will be option C, that is the CO2, carbon dioxide. So carbon dioxide is one of the gas that is also called as a greenhouse gas. So let's move forward with next question. The substance deposited on the utensils is, ऑप्शन है आपके सामने, सूट, एश, कार्बोनेट या फिर टार. Yes, so correct answer जो होगा इस क्वेश्चन का, so black substance deposited on the utensils is option A, that will be the soot. So soot particles are the blackish substance particles which are deposited on the utensils. सो बेसिकली ये जो होता है सूट पार्टिकल्स, सो जैसा कि आपने देखा होगा कि चूल्हा जो होता है, सो मोस्ट ऑफ द जब हम चूल्हे पे खाना पकाते हैं, सो एंड इन मेजर ऑफ द केसेस की जो सूट पार्टिकल्स है वो वहां पर डिपॉजिट हो जाते हैं on the utensils. So that is option A, soot is the correct answer for this question. So, but the next question giver, next question is that is methanol is also called. Methanol is also known as, that is the options आपके सामने है, wood spirit, grain alcohol, vinegar या फिर spirit of wine. Yes, so correct answer जो होगा इस क्वेश्चन का, methanol is also called as the option D is, that is spirit of the wine. So बढ़ते हैं next question की ओर. Ethanol is also called wood alcohol, spirit of wine, acetic acid या फिर ether. तो 1 मिनट. सो मिथेनॉल, एक जो करेक्शन है कि यहाँ पर मिथेनॉल इज ऑल्सो कॉल्ड एज द, सो मिथेनॉल जो है, सो दैट इज द वुड स्पिरिट, ये वुड स्पिरिट है. एंड इथेनॉल जो है, सो इथेनॉल इज द स्पिरिट ऑफ द वाइन. सॉरी फॉर दैट, वन करेक्शन इज देयर, दैट इज द मिथेनॉल इज द वुड स्पिरिट और इथेनॉल जो होगा, सो दैट इज द स्पिरिट ऑफ द वाइन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने. सो विच कंपाउंड इज द पॉइजनस, इथेनॉल, मिथेनॉल, इथेनोइक एसिड या फिर ग्लूकोज. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा, सो दैट विल बी द ऑप्शन बी, दैट इज द मिथेनॉल. सो मिथेनॉल इज द कंपाउंड विच इज द पॉइजनस. नेक्स्ट क्वेश्चन. Denatured alcohol contains pure ethanol, methanol added, water only या फिर acid only. दिस इज द वन ऑफ द, मतलब
बहुत बार ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है. सो डीनेचर्ड अल्कोहल कंटेंट्स, एंड दिस इज द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑल्सो. सो डीनेचर्ड अल्कोहल क्या होता है? सो प्योर इथेनॉल है, मिथेनॉल एडेड है, वाटर ओनली है, या फिर एसिड ओनली है? सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है दैट विल बी द ऑप्शन बी, दैट इज द मिथेनॉल एडेड. जब हम इथेनॉल में मिथेनॉल ऐड करते हैं, सो दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ द डीनेचर्ड अल्कोहल, एंड इट इज वन ऑफ द मिथेनॉल. मतलब जो जब हम ऐड करेंगे इथेनॉल में, सो दैट लीड्स टू द पॉइजनस. सो दैट इज द पॉइजनस, जैसे कि हमने विच कंपाउंड इज द पॉइजनस देखा. सो उसका करेक्ट आंसर तो ऑप्शन बी था, दैट इज द मिथेनॉल. सो मिथेनॉल इज द कंपाउंड विच इज द पॉइजनस. सो डीनेचर्ड अल्कोहल में यहाँ पर मिथेनॉल एडेड होता है. बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. विच रिएक्शन फॉर्म्स ईस्टर एंड वाटर? न्यूट्रलाइजेशन, ईस्टरिफिकेशन, हाइड्रोजनेशन, या फिर कंबस्शन? यस, तो करेक्ट आंसर जो होगा, विच रिएक्शन फॉर्म्स द ईस्टर एंड द वाटर, सो इट विल बी द ऑप्शन बी, दैट इज द ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्डिहाइड्स इज, अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप कौन सा है दिए गए ऑप्शंस में से? सो डैश सी एच ओ, डैश ओ एच, डैश सी ओ एच, डैश एन एच टू. सो जैसा कि हमने देखा है कि अलग अलग जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं वो अटैच होते हैं, और जो भी मतलब कंपाउंड होता है उसमें कुछ प्रॉपर्टीज ऐड करते हैं केमिकली. सो सी एच ओ हो गया, ओ एच हो गया, सी ओ एच हो गया, एन एच टू हो गया, दीज आर ऑल द फंक्शनल ग्रुप्स. लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? सो अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है दैट इज डैश सी एच ओ. सो डैश सी एच ओ इज द अल्डिहाइड. डैश ओ एच जो है दैट इज ऑफ द अल्कोहल. डैश सी ओ ओ एच इट इज ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड डैश एन एच टू इट इज द ऑफ द अमाइन. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. फंक्शनल ग्रुप ऑफ द कीटोन्स. सो कीटोन्स का फंक्शनल ग्रुप हमें यहाँ पर पूछा गया है. सो डैश सी ओ, डैश सी एच ओ एच, या फिर सी ओ एच? सो करेक्ट आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का, सो दैट विल बी द ऑप्शन ए, दैट इज द डैश सी ओ. डैश सी ओ मतलब ये ऐसा लिखा जाता है, दैट इज डैश सी. आई विल शो यू ऑन द राइट स्क्रीन. सो कीटोन जो होता है, सो दैट इज शोन एज द, let's we will see here, that is dash C double bond O डैश. और यहाँ पर जो होता है दैट इज द अल्काइल ग्रुप, यहाँ पर जो है वो अटैच होते हैं. सो आर इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन फॉर द अल्काइल ग्रुप्स. यहाँ पर इथेन हो सकता है, मीथेन हो सकता है, इथेनॉल हो सकता है. सो अगर हम देखें, सो अगर मैं यहाँ पर अटैच करूँ, दैट इज द CH3 डैश C डबल बॉन्ड O. 1 मिनट. C डैश CH3. सो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर देखूं, सो इट विल बी द मिथाइल इथेनॉल. सो दीज आर द वेरियस डिफरेंट, जैसा कि मैंने आपको मतलब अभी तक आपने अगर इस चैप्टर के जो लेक्चर चैनल पे अपलोडेड है, अगर वो नहीं देखे होंगे, सो आप डेफिनेटली उन वीडियोस को देख सकते हैं. सो यू विल नॉट फेस एनी काइंड ऑफ द डिफिकल्टी इन दिस चैप्टर. सो इसी तरीके से जो अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होते हैं, डैश सी एच ओ, डैश ओ एच, सी ओ एच, सो दीज आर ऑल्सो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स. लेकिन करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा, दैट इज फंक्शनल ग्रुप. सो दैट विल बी द ऑप्शन, दैट इज डैश CO.
सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच कंपाउंड हैज द फ्रूटी स्मेल? फ्रूटी स्मेल कौन से इसकी होती है? सिमिलर क्वेश्चन हमने पहले भी देखा है। सो आप बता सकते हैं करेक्ट आंसर। ऑप्शंस आपके सामने: ईस्टर, अल्कोहल, एसिड या फिर कीटोन। सो करेक्ट आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का, द ऑप्शन ए, दैट इज द ईस्टर। ईस्टर that are showing the fruity smell. So बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर आल्सो कॉल्ड अल्कीन्स, अल्काइंस, अल्केन्स या फिर एरोमेटिक्स। ये भी क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस किया। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट है। सो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर द हाइड्रोकार्बन्स दैट कंटेन्स द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ये आपको मतलब हमें फिक्स कर लेना है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर दोस हाइड्रोकार्बन्स इन विच देयर इज द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसके बीच में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हमें दिखाई देता है। सो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर आल्सो कॉल्ड एज द, और जो अनसैचुरेटेड होते हैं दैट इज द अल्कीन्स एंड अल्काइंस। और एरोमेटिक्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल एरोमेटिक का अगर देना चाहे, सो इट इज द बेंजीन इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर द एरोमेटिक कंपाउंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेन्स ओनली सिंगल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड या फिर मेटालिक बॉन्ड। यस, सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर जो होगा दैट विल बी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड के जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं दैट आर द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कार्बन हैज द वैलेंसी। सो ऑप्शन है आपके सामने: 2, 3, 4 या फिर 6। यस, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा, सो दैट विल बी द ऑप्शन सी, दैट इज द वैलेंसी ऑफ 4। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज द 50th MCQ। एंड we have completion of all the 50 this chapter, that is the of the carbon। सो इसी के साथ हमने कार्बन कंपाउंड के भी यहाँ पर 50 MCQs जो है वो हमने यहाँ पर पूरी तरीके से प्रैक्टिस कर लिए। एंड आई हैव एक्सप्लेन ईच एंड एवरी क्वेश्चन का हमने यहाँ पर डिस्कस भी किया है कि क्या उसका प्रॉपर सॉल्यूशन हो सकता है एंड व्हाई द करेक्ट आंसर इज द करेक्ट। मतलब जो भी आंसर करेक्ट है वो करेक्ट क्यों है, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट्स, बिहाइंड दैट आंसर। एंड उसके पीछे जो भी रिक्वायरमेंट है नॉलेज की, सो दैट आल्सो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। सो अभी यहाँ पर सिर्फ एक ही मतलब बचा है, दैट इज द चैप्टर के जो 50 MCQs है, दैट इज ऑफ द स्पेस मिशन। सो दैट वी विल बी सीइंग इन द नेक्स्ट पार्ट। सो तब तक आप आपने अगर इस चैप्टर के या फिर जो भी अदर चैप्टर के एमसीक्यूज नहीं देखे होंगे, सो आपको यहाँ पर मतलब चैनल पे उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सो डेफिनेटली आप उन सारे एमसीक्यूज के वीडियोस को वहाँ पर देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड क्लास 10 का जो साइंस वन का पूरा सिलेबस जो है वो इस चैनल पे अपलोडेड है। सो आप उसके भी सारी प्लेलिस्ट चैनल पे अपलोडेड है, आप जाइए प्लेलिस्ट सेक्शन में चेक कीजिए। सो आपको वो सारे वीडियोस भी चैप्टर से रिलेटेड मिल जाएंगे। सो मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, दैट इज ऑफ द स्पेस मिशन के 50 MCQs। सो तब तक अगर आपको मैंने पढ़ाया हुआ जो भी कंटेंट है अगर आपको पसंद आता है, सो डेफिनेटली लाइक टू दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, also press the bell icon notification for the continuous updates. So thank you everyone for joining here. So thank you all.